चक्षुरुन्ते श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णविशिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यदिपाशादेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणोमि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। So we have accumulated many inauspicious things within our hearts due to our material contamination during the course of many births. Many births, not only this birth, but past birth as well. So when we search into our hearts with the Krishna Katha, then the contamination we have accumulated will be washed off. Our hearts will be cleansed of all rubbish. And as soon as all the rubbish is cleared off, then we are situated in pure consciousness. Yes, Suji. Yes. It is very difficult to eradicate all the false designation from oneself. For example, I'm Indian. It is not very easy to immediately think that I'm not Indian, but pure soul. Similarly, it is not a very easy task for anyone to end this identification with these body designations. But still, if we continue hearing the Krishna Katha, it will be very easy. Make an experiment to see how easily you will be able to free yourself from all these designations. Of course, it is not possible to clear out the rubbish from the mind all of a sudden, but we are immediately aware that the influence of the material nature has become slackened. The material working in three modes: goodness and ignorance. Ignorance is hopeless life. Passion is materialistic. One who is influenced by the modes of passion wants the false enjoyment of material existence. Because he does not know the truth, he wants to squeeze out the energy of the body just to enjoy this matter. That is called the mode of passion. As for those in the mode of ignorance, they have neither passion nor goodness. They are in the deepest darkness of life. Situated in the you can understand this theoretically what I am, what is the world, what this world is, what God is, and what our relationship. This is the mode of goodness. By hearing Krishna Katha, we will be free from the stages of ignorance and passion. We will be situated in the mode of goodness. At least we will have the real knowledge of what we are. Ignorance is like the animal existence. The animal life is full of suffering, but the animal doesn't know that he is suffering. Take a case of a hog. Of course, here in the New York City, no hog is seen, but in villages in India, one can see the hog. Oh, how miserable his life is, living in a filthy place, eating stool and always unclean. Yet the hog is very happy by eating stools and having constant sex intercourse with the she-hog and getting fat. The hog gets very fat because of the because of the spirit of enjoyment. Enjoyments. Hare Krishna. Hare Krishna. Deepak. Yes, Shruti. We should not be like the hog, falsely
thinking that we are very happy, working hard all day and night, then having some sex life. We think that in this way we are happy, very happy. But this is not happiness. This has been described in the Bhagavatam as a hog happiness. Man's happiness is when he is situated in the mode of goodness. Then he can understand what true happiness is. Ivanshu, who is it? Yes, in our daily routine, if we hear this Krishna Katha, the result will be that all the dirty things in the heart, accumulated life after life, will be cleared out. As a matter of fact, we will see that we are no longer in the ignorance or in passion, but are situated in the mode of goodness. What is that position? Yeah. Anushka Mataji? Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. We will find ourselves joyful in every circumstance of life. We will never feel morose. In the Bhagavad Gita, we find that this is our Brahma Bhuta, highest stage of goodness situation. The Vedas teach us that we are not this matter. We are Brahman. Aham Brahmasmi. Lord Shankaracharya preached this gospel to the world. We are not this matter, we are Brahman spirit. When spiritual realization is actually accomplished, then our symptoms will change. What are those symptoms? When one is situated in his own spiritual consciousness, then he will have no hankering and no lamentation. Lamentation is for loss and hankering is for gain. Two diseases characterize this material world. What we do not possess, we hanker after. If I get these things, I will be happy. I have no money, but if I get $1,000,000, then I'll be happy. And when we have $1,000,000 and somehow it will be lost, so we'll cry, oh, I have lost it. When we hanker for earning, that is kind of distress. And when we suffer loss, that is also distress. But if we are situated in Brahma Bhuta, we will neither be distressed nor will we hanker. We will view equally everyone and everything. Even if we are situated in the midst of fiery turbulence, we will not be disturbed. That is the mode of goodness. Yeah. Yeah, Swati is there. Hare Krishna. Hare Krishna. Bhagavatam means the science of God. If the science of God is preserved in, we will be situated in the Brahmbhuta status. From that Brahmbhuta status, we have to work, or work is recommended here. So long as we have this material body, we have to work. We cannot stop working, it is not possible. But we have to adopt the tactics of yoga. And in this way, even by doing some ordinary work, which by destiny or circumstances we are put into, there is no harm. Suppose that in one's own occupation, one must speak a lie, or his business cannot go on. Lying is not a very good thing. So one concludes that the business is not based on very moral principles, and one should therefore give it up. In the Bhagavad Gita, however, we find instruction not to give it up. Even if we are put in such circumstances that our livelihood cannot go on without some unfair practice, we should not give it up, but we should try to make it purified. How is it purified? We should not take the fruitive result of our work that is meant for God. Yeah. Karan Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Sukrita means pious activities and Dusakrita means impious activities. On the material level, we can be pious or impious. Either we are performing some pious activities or we are performing some impious activities. Or we have a mixture of pious and impious. Lord Krishna advises that we should act with knowledge of or devotion to the Supreme. What does that knowledge mean?
It means that I am the part and parcel of the Supreme Consciousness, or that I am not this body. If I identify myself as an American, as an Indian, or this or that I am on the material plane. We should identify ourselves as neither Americans nor Indians, but as pure consciousness. I am a subordinate consciousness of the Supreme Consciousness. In other words, I am the servant of God. God is the Supreme Consciousness, and I am His servant. So, for our present understanding, subordinate means servant. Hare Krishna. Hare Krishna. We do not ordinarily carry out the work of a servant in relationship to God. Nobody wants to be a servant, but everyone wants to be the master. Because to become a servant is not a very palatable thing, but to become the servant of God is not exactly like this. Sometimes the servant of God becomes the master of God. The real position of a living entity is to be the servant of God. But in the Bhagavad Gita, we can see that the master Krishna became the servant of Arjuna. Arjuna is sitting in the chariot and Krishna is his driver. Arjuna is not the owner of the chariot, but in the spiritual change to the concept of the material relationship. Although the whole relationship, just as we have experience of it in this world, is there in the spiritual world. That relationship is not contaminated by matter. Therefore, it is pure and transcendental. It is of a different nature. As we become advanced in the spiritual connection of life, we can understand what the actual position in the spiritual transcendental world is. Yes, Udipso. Where the Lord instructs us in Buddhi Yoga. Buddhi Yoga means that we have full consciousness that we are not this body. And if I act with this understanding, then I'm not body, I'm consciousness. This is a fact. Now, if we act on the level of consciousness, then we can overcome the fruitive results of good work or bad work. It is a transcendental stage. I think Prabhuji, there is a new devotee joined, Himanshu Prabhuji. He can read and go later. His turn comes after Deepak Guruji. Oh, okay, okay. Sorry, Prabhuji. It No, means thank that we are acting on another's account, on the Supreme's account. We are not liable to loss or gain. When there is gain, we should not be puffed up. We should think this gain is for the Lord. And when there is loss, we should know that this is not our responsibility. It is God's work, His. Then we will be happy. This we have to practice everything on account of the Supreme. This transcendental nature we have to develop. This is the trick of doing work under these present circumstances. As soon as we work on the level of bodily consciousness, we become bound by the reaction of our work. But when we work through spiritual consciousness, we are not bound either by pious activities or by vicious activities. That is the technique. Manisha, this word is very significant. Manishan means thoughtful. Unless one is thoughtful, he cannot understand that he is not this body. But if one is little thoughtful, he can understand. Oh, I'm not the body, I'm the consciousness. Sometimes in our leisure time, we can see, oh, this is my finger, and this is my hand, this is my ear, and this is my nose. Everything is mine. But what I, and I'm feeling this is mine, and that I am. Simply a little thought is required. Everything is mine, my ears, my fingers, my hand, my. And what is the I? The the I is that consciousness in which I am thinking this is mine. Now, if I am not मतलब this ये याद body, रखना then है, why should ये I? काफी मैं बस ये हाईलाइट करना चाह रहा था कि काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम लोग को याद रखना है ना. टीचिंग को पॉइंट है ये काफी बड़ा. My eye is my finger, then who is my, है ना, इसको डिस्कस कर लेंगे हम at the end of the class. Yes, Deepak. Yes, Prabhuji. Now, if I am not this body, then why should I act for this body? I should act for myself. Then how can I work for myself? What is my position? I am consciousness, but what kind of consciousness? Subordinate consciousness? I am part of the supreme consciousness.
then what will my activities be? My activities will be under the guidance of Supreme Consciousness, just as in the office. The managing director is the Supreme Consciousness. For example, in the office, everyone is working under the direction of the manager. Therefore, they have no responsibility. They have only to discharge their duties, either pious or impious duties. Never mind. In the military line, too, the order is given. The soldier has to execute it. He does not consider whether it is pious or impious. That does not matter. He simply has to act. Then he is a real soldier. He acts in that way and he gets his reward. He gets title and honor. He does not care. The commander says just go and kill the enemy and he is rewarded. Do you think that by killing one gets rewarded? No. It is for the duty discharge. Similarly, here is the situation is that Krishna is instructing Arjuna. Krishna is the supreme consciousness. I am consciousness, the part and the parcel of the supreme consciousness. So, my duty is to act according to the supreme consciousness. For example, I consider my hand as a part of my body. Now, it is moving in its own way. As I want, let my hand be moved, let my legs be moved, let my eyes be opened and see. So I am dictating and these parts are working. Similarly, we are all parts and parcels of Supreme. When we train ourselves to move and act in accordance with Supreme Consciousness, then we become transcendental to all these pious or impious activities. That is the technique. What will be the result of this technique be? We become free from the bondage of birth and death. No more birth and death. Hare Krishna. Modern Hare science. Krishna. Yeah, go ahead, Madhu. Modern scientists and philosophers do not think about these four things: birth, death, disease, and old age. They set them aside. Oh, let us be happy. Let us enjoy this life. But human life is meant for finding a solution to the problems of birth, death, disease, and old age. If any civilization has not found a solution to these four problems, then that is not a human civilization. Human civilization is meant for finding a complete solution for these things. So here in the Bhagavad Gita, the Lord says, Karmajam buddhi yuktaha. Karmajam means whenever there is action, there will be some reaction. If one acts in badness, there will be a bad reaction. But reaction, either good or bad, is in the higher sense. All suffering. Suppose that by good action I get a good birth, fine bodily features, and a good education. All these good things I may have, but that doesn't mean that I am free from material pains. The material pains are birth, death, old age, and disease. Even if I am a rich man, a beautiful man, an educated man, born in an aristocratic family, etc., I still cannot avoid death, old age, and disease. Yeah. So we must not be concerned with pious activities or impious activities. We must be concerned with transcendental activities only. That will save us from this bondage of birth, death, old age, and disease. That should be our aim in life. We should not be hankering after good or bad things. For example, suppose one is suffering from some disease. He is lying in bed, eating, passing nature's call uncomfortably and taking bitter medicines. He always has to be kept clean by the nurses, otherwise, there is an obnoxious smell. While he is lying in this condition, some friends come to him and ask how he is feeling. Yes, I am feeling well. What is this well? Lying in bed uncomfortably taking bitter medicine. And another friend comes to him and asks how he is feeling. Yes, he says, I am well. Similarly, in our material conception of life, if we think, I am happy, that is foolishness. There is no happiness in material life. It is impossible to have happiness here. In this condition, we do not know the meaning of happiness. That's why this very word is used, Manisaha, thoughtful. Hare Krishna. Hare Krishna.
We seek happiness by some extraneous artificial means, but how long does it last? It will not endure. We again come back to sorrow. Suppose by intoxication we feel happy, that is not our actual happiness. Suppose I am made unconscious by chloroform and I don't feel the pain of an operation. That doesn't mean that I am not having an operation. That is artificial. Real pleasure, real life exists. As is commanded in the Bhagavad Gita by Shri Krishna, the thoughtful give up the reaction of work, being situated on the level of pure consciousness. The result is that this bondage of birth and death, disease and old age comes to an end. This end is in union with the true identity, Krishna, the reservoir of pleasure and the eternal bliss. There indeed is the true happiness for which we are intended. Okay, next chapter. Are we starting next, Prabhu? मैं सोच रहा था कि थोड़ा डिस्कस कर लेंगे पहले, हाँ, फिर I think that's a टाइम good idea. रहेगा तो Yes, Okay. yes, Prabhuji, let's do the discussion. तो एक तो कल एक पॉइंट आया था, प्रभुपाद ऊपर लिखे हैं और वो पॉइंट हम डिस्कस करने से रह गए थे। मैंने सोचा कि डिस्कशन में आएगा बट फिर वो आया नहीं। तो वहाँ पे आया था कि sometimes devotee becomes bigger than or greater than Lord himself. अराउंड एक क्वेश्चन बाद में भी मुझसे दीपक प्रभु ने पूछा था। Anyway, यस प्रभु जी, वो सर्वेंट वाला आया था। तो कल एक पॉइंट आया था, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद सब लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे। एक तो कल भी पॉइंट था कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि समटाइम्स इन द लविंग एक्सचेंज ऑफ दिस रिलेशनशिप विद कृष्णा, द डिवोटीज बिकम इवन ग्रेटर देन हिम। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। एक तरफ तो हम कहते हैं कृष्णा इज सुप्रीम, दूसरी हम तरफ हम कह रहे हैं कि डिवोटी समटाइम बिकम्स ग्रेटर देन कृष्णा। तो ये क्या मैटर है? इसको कोई मतलब ये क्वेश्चनेबल नहीं लग रहा है सुनने में। मैं कल पढ़ते पढ़ते सोच रहा था इसको डिस्कस करूंगा एंड देन इट डिड नॉट केम। आज भी आया था ना एक एग्जांपल में प्रभुपाद जी ने जब दिया था कि वॉर के टाइम जब, हाँ, तो वो वाला एग्जांपल शायद यहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं। क्या है वो? जब अर्जुन, एक्चुअली अर्जुन तो वॉर में फाइट करना था, बट भगवान उनका फिर रथ चलाने के लिए, जो चैरियट चलाने के लिए भी रेडी हो गए थे। और उस वॉर में ये भी था कि जैसा और लेक्चर्स में भी सुना है कि उसमें वॉर के दौरान ये बताना पड़ता है, जो एक्चुअली जो लड़ाई कर रहा है वो ये बताएगा अपने ड्राइवर को पैर किस तरफ जाना है, वो भी पैर मार मार के। तो लेफ्ट पैर मतलब लेफ्ट साइड, राइट पैर मतलब राइट साइड। तो भगवान अर्जुन एक्चुअली वो कर रहे थे एंड भगवान एक्सेप्टेड दैट टू। तो वाली पोजीशन भी भगवान ने एक्सेप्ट की थी। तो शायद वो एग्जांपल हम यहाँ कर सकते हैं। दे सकते हैं। दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल। एक सेवा की दृष्टि से भी होता है। सेवा की दृष्टि से कैसे होता है? जैसे एक तो एग्जांपल यही हो गया जो स्वाति माता जी ने बताया है। एक एग्जांपल वो भी है जिसमें ऐसा कहते हैं कि सेवा की दृष्टि से अगर हम देखें तो जो लविंग एक्सचेंजेस होते हैं भक्त और भगवान के बीच में, उसमें कैसे हार जाते हैं। जैसे मान लीजिए भक्त है, वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो वो तो टॉप मोस्ट लेवल पे है, अन्य अभिलाषिता शून्य, उसकी कोई अभिलाषा बची ही नहीं है ना। पर तो अब ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि भगवान जब उसके पास आके बोल रहे हैं कि आई एम वेरी हैप्पी विद यू बट आई ऑल्सो वांट टू सर्व यू नाउ, यू टेल मी हाउ कैन आई सर्व यू। अब क्योंकि वो उस स्थिति में है, अन्य अभिलाषिता शून्यम शुद्ध भक्त, वो कह रहा है कि यस यस इफ यू वांट टू सर्व मी गिव मी योर सर्विस, गिव मी मोर योर सर्विस ओनली। तो क्या हो रहा है कि अब ऑलरेडी सर्विस कर रहा था, भगवान उसको सर्व करने के लिए बोले कि यू गिव मी योर सर्विस सो आई कैन प्लीज यू। वो कहता है मैं कैसे प्लीज हो सकता हूँ, मैं तो आपकी और सेवा करके खुश हो सकता हूँ, मुझे और सेवा दो। तो उस लविंग एक्सचेंज में देखा जाए तो डिवोटी अपने लिए कुछ मांग ही नहीं रहा है और भगवान ऐसा कुछ नहीं निकाल पा रहे जिससे उसे खुश कर सके, उसकी कुछ सेवा कर सके, क्योंकि उसके लिए तो अपने पास कुछ बचा ही नहीं है। जैसे सनातन गोस्वामी ने वाव ली थी कि गोवर्धन की मैं परिक्रमा करूंगा, तो बहुत बूढ़े हो गए थे, उसके बाद भी गोवर्धन परिक्रमा किया करते थे, तो भगवान खुद आए उनको रोकने के लिए, बस अब रहने दो। जितने हमारे आचार्य हुए भगवान चाहते तो बस कहने की तो बात थी उनके मन में, पर इच्छा थी नहीं, उनको ठीक कर देते इमीडिएटली। तो एक तो सेवा की दृष्टि से बोलते हैं कि वो बड़े हो जाते हैं, तो उस लविंग एक्सचेंज में भगवान हार जाते हैं।
और एक भाव की दृष्टि से बोल देते हैं कि भक्त बड़े हो जाते हैं। तो उसमें कैसा होता है कि भाव की दृष्टि से कि एक्चुअली भगवान तो डायरेक्टली एक्सेसिबल है नहीं हम किसी को भी, पर शुद्ध भक्त के माध्यम से वो एक्सेसिबल हो जाते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं बहुत करुणामयी होते हैं, तो इतने करुणामयी होते हैं कि हम जैसे पतित जीव को भी पकड़ लेते हैं और उसे चैंटिंग का एक माध्यम दे देते हैं। चैंटिंग के बाद भी उसको दीक्षा भी देते हैं, उसकी जिम्मेदारी भी ले लेते हैं दीक्षा के माध्यम से कि नहीं मैं तुम्हें लेके जाऊंगा भगवान के पास। तो उस भाव की दृष्टि से फिर उनको बड़ा कह देते हैं हम लोग। जैसे जैसे मान लीजिए कि ऑफिस जाते हैं हम लोग, तो किसी बड़े अधिकारी से मिलना है किसी ऑफिस में, तो बाहर जो व्यक्ति बैठा है कहने को बड़ा नहीं है, पर क्योंकि उसी के माध्यम से मिल रहे हैं तो हम कह देते हैं अजी वही मेन अधिकारी, तो नहीं मानो तो उन्हीं के माध्यम से मिलते हैं सब उनसे। उस टाइप से उस भाव की दृष्टि से भी भगवान को से उनको बड़ा बोल दिया जाता है। वैसे अदरवाइज उसमें कृष्णा की जो ओरिजिनल सुप्रीम पोजीशन है वो डिस्टॉर्ट नहीं होती है बिल्कुल भी। और सेम कंटेक्स्ट में कल प्रश्न था जो स्वाति माता जी ने बताया था कि जो नाम है वो नामी से बड़ा है ना। जो भगवान राम का एग्जाम्पल है रामायण से कि उनका नाम उनसे बड़ा है। अब ये कई बार कॉन्ट्राडिक्ट सा लगता है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम पढ़े हैं कि भगवान ने अपने नेम फॉर्म जितने भी रिजर्वॉयर ऑफ प्लेजर जो बोलते हैं वो सारा उन्होंने नाम में डाल दिया। तो बोले जब नाम में डाल दिया तो ये तो इक्वल हो जाना चाहिए, वैसे क्यों बोले इसको कि इससे बड़ा हो गया। तो वो भी भाव की और सेवा की दृष्टि से है। होता क्या है कि जैसे भगवान बोले भाई व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ गेटिंग मी। अब मान लीजिए कोई बोले मुझे तो भगवान आपकी प्राप्ति करनी है, तो भगवान बोले ओ या यू कैन गेट मी वेरी सिंपल स्टैंडर्ड सर्वधर्मान परित्यज्य। तो अब ये छोड़ना आसान थोड़ी है। वी आर अटैच्ड टू सो मेनी पीपल सो मेनी थिंग्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। अब उसको छोड़ के और तुरंत बोले आपको पाना तो भाई बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ऐसे आपने तो बता दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। But then holy name of Krishna becomes more merciful. Why? Because you can chant, and by chanting slowly you will start abandoning all the religions. मैं इससे अटैच था या इससे अटैच थी या इससे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से को मैं ज्यादा चाहता हूँ या चाहती थी, उन सब चीजों को भी छुड़वा के होली नेम हमें उस प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाता को मिल सकते हैं। इसलिए उस सेंस में भी हम बोलते हैं नहीं भगवान का नाम भगवान से बड़ा है, क्योंकि वो ही भगवान से मिलाने वाला है, तो हम उसको ज्यादा वैल्यू दे देते हैं। तो वो भी एक भाव की दृष्टि से होली नेम को उनसे बड़ा एक पास टाइम भी है, कभी टाइम को सुनाऊंगा, जिसमें रामायण में आता है, जिसमें भगवान राम और हनुमान जी आमने सामने आ जाते हैं एक भक्त को बचाने के उसमें। तो वहां भी राम के नाम की महिमा को बताया कि वो कितना बड़ा है। तो भाव की दृष्टि से वो बोल दिया जाता है। अदरवाइज कई बार ये भी पढ़ते हैं कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, तो कई बार भाव की दृष्टि से ये बोल देते हैं कि नाम जो है वो नामी से बड़ा है। ठीक है, तो मैं यही कल का एक मिसिंग पॉइंट था वो डिस्कस करना चाहता था। तो अभी सब लोग अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं, आज का रियलाइजेशंस, क्वेश्चन, कमेंट हम डिस्कस कर सकते हैं। Yes, issue bro, you always take the initiative, they will start from you only. Which I really like the analogy about the war and the soldier. What Prabhupada is trying to convey, that if we follow the rules of the government, suppose soldier is being said that he has to shoot the person. So if he shoot, he does not get any punishment. He will be rewarded for the same thing. And similarly, if person went in the street with gun and he shoot person, he will be punished. So in the spiritual realm, Krishna is the supreme. If we follow his order, you will be awarded in spiritual realm, and accordingly you will be get promotion in the spiritual life. And if you do not follow and you speculate by your own, you will be punished and you will not get the actual result what is meant for spirituality actually spiritually meant for. So yeah, I really like that analogy. And the thing you're discussing about the Krishna being greater than, I remember that in the last book we are reading in Matchless, I guess. So it was written that even in Prabhupada in Bhagavad Gita, Prabhupada, he also said that
If he is a child, and then also he is God, and if he is a servant, then also he is God. So there's a situation, as you said, that उनके कहीं भी रहते हैं साक्षात, तो भले ही वो कोई भी हो, and but he is God. We do not have to Yeah. forget. Yeah. Yeah. These एक two बार points. मान लीजिए नंद और यशोदा के केस में देखते हैं, नंद महाराज की भगवान चप्पल अपने सिर पे लेके, जब छोटे थे चप्पल सिर पे लेके चला करते थे उनकी, उन्हें पहनाने के लिए। तो एक तरह से तो भगवान है, पर दूसरी तरह से उस पोजीशन पे आ गए हैं कि नो नो आई वांट टू सर्व यू। जैसे अर्जुन और कृष्ण के केस में हम देखते हैं, जैसे स्वाति माता ने बताया कि सारथी बन के बैठ गए हैं, तो वो दैट्स अ लविंग एक्सचेंजेस। ऐसा लगता है कि बिगर पोजीशन है, बट उनकी ओरिजिनल पोजीशन, लाइक यू आल्सो सेड, वो ओरिजिनल जो उनकी सुप्रीम गॉड की पोजीशन है, वो उससे कभी भी हैम्पर नहीं होती है। एंड दैट्स व्हाई ही इज कृष्णा। थैंक यू यशु ब्रो। यस उदित ब्रो जी। Yes, Prabhuji, I have a question. Basically a doubt. अभी जैसे बताया प्रभुपाद ने कि ब्रह्मास्मि, we need to understand our real constitutional position. We are not this body, we are this soul. This is keep on repeating in every book, in every most of the paragraphs we have this line. But the problem is, for a grhasta, it is very difficult to stay in that position, especially because अभी ठीक है, अभी हमें इतना टाइम हो गया इस कॉन में, ये सब पढ़ रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट टू मेक द अदर पीपल अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल। और गृहस्था में वो चीज इमिटेट करना, मतलब उस लेवल पे काम करना, मुझे लगता है इट इज वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि आपको सोसाइटी में रहना है और आपके साथ अननेसेसरी ना चाहते हुए भी एक टाइम ऐसा आता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, अगर स्पिरिचुअलिटी में भी हो कि why I'm doing all this, but still you have to do all the things. But because the thought is not constant that why I'm doing this, आप दोबारा से उसी चीज में रम जाते हो, माया में, या और वी कैन से, है ना। तो प्रभु जी मतलब तो देखिए कैसा है कि आपके पॉइंट तो सही है ही कि भाई इसको रियलाइज करना, ये कहना कि भाई वी आर नॉट द बॉडी वी आर द सोल, ये कहने के लिए इजी हो सकता है, पर इसको रियलाइज करना ये इतना इजी नहीं है। और बिकॉज ये इजी नहीं है, इसलिए हर बुक में भी कई बार ये रिपीट होता है। भगवत गीता का होल पॉइंट ही है, जो बेस यही है कि भाई ये पहले बेस है, फिर इसके ऊपर की आगे बात करते हैं। बोले ये समझ में मुझे नहीं आया, तो उसको ही दोबारा बार बार रगड़ा जाता है कि भाई समझो, पहले इसे समझो, इसे समझो। जैसे आज भी हम देखें कि प्रभुपाद वो एग्जांपल दिए ना, माय आईज, माय नोज, माय फ्रेंड, तो बता रहे हैं कि अलग अलग इंडिविजुअल, माय फ्रेंड मतलब देयर आर टू पीपल, यू एंड फ्रेंड। माय आईज मतलब आईज आर देयर, ओके, बट हु इज आई? माय फ्रेंड आईज। तो बार बार उसी पॉइंट को समझाया जाता है। बट मुझे लगता है इसका आश्रम से तो कोई नहीं है, ग्रस्त है कि ब्रह्मचारी दोनों के लिए समझना जरूरी है। और हम देख रहे हैं आचार्य भी हमारे ग्रस्त हुए हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, जिन्होंने दिखाया है कि इस पोजीशन पे जाके हम लोग रह सकते हैं, जिसमें वी से कि ओके वी आर द स्पिरिट सोल। तो ऐसा नहीं है, पूर्व आश्रम से तो इंडिपेंडेंट है, और गृहस्थ आश्रम या ब्रह्मचर्य आश्रम से हाँ ये है कि गृहस्थ आश्रम में रियलाइजेशन जल्दी होते हैं कि नहीं वी आर स्पिरिट सोल, क्योंकि वहाँ पे पेन जल्दी मिलता रहता है ना, रियलाइजेशन इसलिए वहाँ पे जल्दी स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट इम्प्लाई करना प्रभु जी मेरे को लगता है उतना डिफिकल्ट भी हो जाता है। हाँ डिफिकल्ट है डेफिनेटली, इसीलिए तो हरि नाम आ गया ना पिक्चर में। तभी तो कह रहे हैं कि 16 माला आप डेली जपेंगे तो जल्दी रिलेशन हो जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। वैसे डिफिकल्ट है, इसीलिए तो हरि नाम की महिमा है कि हरि नाम आपके बाकी, हरि नाम आपको सब कुछ दे देगा, नॉलेज भी दे देगा। अगर सिर्फ जब जैसे हरिदास ठाकुर का देखते हैं, वो सब इसके अंदर सारी पोटेंशियल आ गई, इसलिए तो हरि नाम की महिमा है। वैसे तो रियलाइज होना मुश्किल ही है, बट हरि नाम का एक सहारा है जो रस्सी को पकड़ के सारे काम काज पूरे होके और ऊपर हम भगवत धाम जा सकते हैं, वो रियलाइजेशन लेके। करेक्ट ना? यस प्रभु जी, यस, मेकिंग सेंस। यस प्रभु जी। ओके, आपको आज वो नहीं मिला कि, मेरा भी क्वेश्चन है आपसे, आपको आज वाला जूम नहीं मिला अनलिमिटेड वाला जो हम डेली यूज करते हैं? प्रभु जी वो था तो सही, मतलब वो मैं स्टार्ट करा था ना, तो उसमें ऑलरेडी मीटिंग चल रही थी। ओह अच्छा, तो ठीक है, इसलिए तो फिर आप मैंने 4 मिनट बचे तो हम जल्दी करेंगे। हाँ, तो एंड मोमेंट है में ना? मैंने फिर वो डिलीट करके ये वाला लिंक दिया है। ओके चलेगा। यस, सॉरी नहीं, इम्प्रूव आप कुछ कह रहे थे शायद।
नहीं प्रभु जी, मैं तो बस ये बोल रहा था कि ये जो सारे चैप्टर्स हैं कि जो आपने बोला, हाँ। एक्चुअली ऑलरेडी कवर्ड द पॉइंट, बिकॉज मैं अपने लिए बोल सकता हूँ कि हम जो आधे घंटे पढ़ते हैं, हाउ मच आई रिमेम्बर आउट ऑफ इट, राइट? तो इट्स सो इम्पोर्टेंट टू रीड दिस इंस्ट्रक्शंस और like every day. I mean, you can go through this book, same book को आप इतना पढ़ सकते हैं, and you can learn realization कितना है उसका, right? So इसमें और बहुत अच्छे से, जैसे प्रभुपाद ने कितने सारे एग्जांपल दिए, गृहस्थ लाइफ को भी कवर किया और बॉडी, सेंसेस और सेंस ग्रेटिफिकेशन को लेके, राइट? और आई वाज लाइक, मेरे को लग रहा था कि मेरे बारे में ही बोला जा रहा है कुछ, राइट? So the point is, it's just you have to read it every day, and you may find these instruction again and again in different books Prabhupada is mentioning, and all we need to know these same instructions, right? हमें ज्यादा philosophical थोड़ी बनना है कि हमें दुनिया भर की नॉलेज चाहिए. Understanding the basic principles, and if we understand the basic principles and eventually realize them, our life is successful. So that is all my point, Prabhuji. Yes, and these points are so strong, right? अब ये इतना इम्पैक्ट है इनका कि हमें फील होता है जब हम इन्हें पढ़ते हैं, यार ये चीज नहीं हो रही है, या यार वी आर मिसिंग, और मैं इस लेवल पे हूँ अभी. So and these are like reminders, so we should, what we are doing is a great thing, because reading these things every day is helpful. And मैं वही बोल रहा था कि we can, once we complete, we can always come back, right, to Prabhupada books. It's just nectar. Yes, ma'am, Prabhuji. Yeah. Thank you so much. Yeah, Deepak bro. यस प्रभु जी, मुझे एक पॉइंट अच्छा लगा था, वो लैमेंटेशन एंड हैंकरिंग वाला, कि पहले हम हैंकरिंग करते हैं और फिर वो चीज़ हमारे पास आ जाती है तो फिर लैमेंटेशन होने लगता है, मतलब हम डरने लगते हैं कि वो चीज़ खो ना जाए हमसे. तो उस लेवल से हमारी पूरी लाइफ इसके पीछे मतलब यही चलता रहता है. पहले बचपन पाने में के लिए फिर रोते हैं, पहले हाँ, पाने के लिए रोए, जब आ गया तो संभाल के रखने के लिए रो रहे हैं, कहाँ रखे, बैंक में रखे, यहाँ रखे, वहाँ रखे. अरे yes. प्रभु जी, ये पूछिए नहीं, आपको बताया था ना, I'll tell you later. अभी 4 दिन से वही चल रहा है. सबका रियलाइजेशन है. यस दीपक. तो बस इस मतलब इन दोनों से हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं, वो है हरिनाम. हम हरिनाम का सहारा लेकर के हम इन दोनों चीजों से ऊपर उठ सकते हैं और मतलब कॉन्शियसनेस के लेवल पे हम फिर जा सकते हैं, उस लेवल पे हम अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं. Yeah. Thank you दीपक ब्रो, नाइस पॉइंट. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू. अभी 1.5 मिनट बचा है. कौन, कनक माता जी, यू वांट टू शेयर समथिंग? हरे कृष्णा प्रभु जी. यस माता. प्रभु जी, वही मतलब जो उदित ने बोला था उसी पे ऐड ऑन करना है कि लाइक थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, मुझे ऐसा फील होता है गृहस्था में, क्योंकि मतलब हमारा मेन पर्पस होता है डिटैच होना, but being living with your parents and everyone around you, children, so इतना ज्यादा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है डिटैच होना बेसिकली. ना, डिटैच होना प्रोसेस है ही नहीं. हम पढ़े नहीं अभी, कल परसों आप थे ना क्लास, अच्छा आप नहीं थे तो उसमें था ना, प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भोगी है वो भी चोर है ना? जो भोगी है वो तो चोर है ही, और जो विरक्त है वो भी एक तरह से बोला जाएगा झूठ ही बोल रहा है. बोले क्यों? बोले जो भोगी है वो तो चोर, हमें क्लियर पता है कि भगवान का जो चीज है उसको वो यूज करना चाह रहा है, करेक्ट, इसलिए वो चोर हो गया. और जो विरक्त है वो भी किस बात का विरक्त है? क्योंकि भगवान की थी चीजें सारी, वो कह रहा है मैं विरक्त हो गया. तो तू विरक्त किस बात का हो गया भाई? भगवान की थी वो तो पहले भी. I read हमें that. तो अटैच होना है ना, तो हमें तो अटैच होना है कृष्णा से, दैट इज इम्पोर्टेंट. हमारा जो प्रोसेस है ना वो कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसमें हमें विरक्ति का पॉइंट नहीं है, पॉइंट है आसक्ति का. किससे आसक्ति? कृष्णा से.